Hi, good day. Hi, Is this how are you, Anushka? ma'am? I'm very good. Is this Anushka? Yes, ma'am. This side Anushka Sharma. Anushka, I am from your own country, India, and I hope for your high studies you are outside India. Yes, ma'am. All right. I am in Russia right now, pursuing my third year of MBBS. All right. All right. I really wish everything goes the way you want. Since today is Guru Purnima, Ji. and you owe this kind of culture internally because I have seen you very closely, not only as a mentor outside the school, but in the school itself. Few things I would like to say, and hopefully that would also get radiated within you. Guru is a person who opens your eyes Yes, ma'am. and opens your heart with the grace by which you can spiritually, mentally, emotionally transform one person to another. A guru is one who takes one from the darkness to the light, you may be knowing, and from ignorance to the knowledge, from suffering to the true happiness. Today on Guru Purnima, I, Mrs. Chaudhary, want to know what message would you like to convey to all the youngsters who are junior to you, since you have crossed that way and you have come up and uplifted yourself. India is in a very difficult stage and world is under pandemic. Education system has somehow wrecked and students right from class 1 till 12th are blocked, and somehow the online portion is trying to replace. I want to learn from you what exactly, as per you, since you are Indian like me and you've been here and you're very much familiar from the village to the city, from the town to the international stage. You're familiar. So you have tasted all roads and communications. So if thoda piche ka background goes good, so it would be more comfortable. Ma'am, I don't think so. It will be possible right now, but I guess this will work. This will Kind work. of. Yeah, this will work. Okay. Thank you so much. Okay. Hmm. So please do guide, please do inform all those youngsters, because almost 18 lakh students have filled the form for NEET or JEE. If I mix them somewhere, 20-25 lakh. And nobody is very much secured kya hoga. A tentative date is given ki 16th September will be your examination. Now I want to learn from you, since you have crossed this age. इस समय आप लोग जो 18-20 लाख बच्चों के दिमाग में what is happening these days, क्या हो रहा है आजकल? Ma'am, first of all, due to this all corona, it's affecting people in different ways. Some people are taking it in a positive way, like you will get a lot of time. If I'll say for the youngsters, they'll say, okay, we have a lot of time to prepare for NEET. But at the other, on the other side of this, like we always say, a coin has two sides. So, like some people can take it in a wrong way, like it can cause a bad effect on their mental health, like okay, how much we have to study, like one will say I have completed this much of syllabus, now I can revise it again and again. It's like getting on my nerves. So it has two different things. So the basic thing what one should do is do whatever you want and always love what you are doing. Don't enforce things on you. Like we are doing MBBS because we want to, it's our passion. And secondly, for all the students or the youngsters who are even studying from the Turning Point or any other guy in all over the India, they should basically take this corona time in a positive way. They're getting a lot of things to know, they have a lot of time to prepare, and we can even take it in a new way. Or always we say कि इन्वेंशन कैसे होता है. इन्वेंशन होता है कभी कभी कुछ गलतियों से, जब कुछ नई चीजें ऐड होती हैं, तो उस तरीके से. सो दैट्स व्हाई वी शुड ऑलवेज टेक इट इन अ न्यू वे कि हाँ चलो एक नया मौका मिला है. नीट ऐसे मई में होता था, नाउ इट्स पोस्टपोन टू सितंबर.
So it's like that कि आप उसको एक अच्छे वे में लीजिए, क्या पता इस पर नीट के रिजल्ट्स एकदम बहुत ज्यादा ही अच्छे आ जाए. So that's what my preference is and my point of view is. Thank you so much, Anushka. I have always seen you participating in so many curriculum which happened in the school, the extracurricular activities, and equally you were always trying to balance your academics. So somehow, out of so many students like you, and out of the crowd, you are one of the representative who wanted to balance the studentship. How easy it is now? Ma'am, I think it was easy even before. If you will try to force things, then it gets a little ruptured and doesn't go well. And if you try to, like, just go with the flow, like if I have to go in a debate competition, I will go. And just like I'll share my experience, like one day I was to go for a debate competition in class 12, and I was having science subject, and after half day I returned back after the competition, and I just asked my friends that what has happened, what topics have covered, or what the teacher has taught today. So I just covered my syllabus also, and I also participated in the competition. So it can go hand in hand, and now I think it's much easier, as in parents are understanding, the teachers are understanding, and our colleagues or the students, they are also understanding. So it's not a big deal. And I think if you'll be just a bookworm, it will not help you much. You have to develop your personality. You should know how to talk with others, the basic personality traits or the etiquette. So I think co-curricular is also very important. It should be a part and parcel of one's life. That's great. That's great. Anushka, I'm reminded of आपने एक गेटकीपर से लेकर के स्कूल के सीईओ को भी थैंक यू कहा था अपने स्कूल लाइफ में सेटल के बाद. और जी. I am reminded of, and since I was a part of the same, so I really feel pride कि एक बच्चा हर छोटे सेक्टर से लेकर बड़े सेक्टर की पार्टिसिपेंट्स को जानता है. अनुष्का, क्लास 11th 12th और उसके नीचे की क्लासेस में बच्चों की मेंटेलिटी एग्जाम से पहले और एग्जाम हो जाने के बाद का वर्ल्ड कितना फर्क है? हाउ ग्रेट द डिफरेंस इज. It's like two worlds apart. One thing is, then when we were in the class 8 till class 8, so we were like, our parents used to tell ki okay, exams are coming, पढ़ना है, date sheet कब है, कैसे है. So one thing was like that when we were younger, like okay, our parents used to mock us, like okay, you are not studying, your exams are coming. And when you start growing up, as you reach class 9th or 10th, then what happens is that we are ourselves very aware of our date sheets, like okay, exam kab hai, boards kab aa rahe hain, like we used to tell our parents instead of them asking us. So that's a difference that is created when you are younger and when you start growing up. And one thing which always remain constant even in MBBS is that even after our papers are done, we kind of relax. All that paper phobia is gone out, it disappears. But now what happens is we seek for knowledge now instead of just gaining marks. That's good. That's good. Now we focus more on what is our knowledge. We won't argue that okay, I got more marks than you, I'm the topper, you got less marks. No, we argue on this thing, that how much knowledge am I having, and if I am having more than you, I should share with you. And if my friend is having that knowledge that I am that I'm not having, then my friend shares it with me. So there are things changing. Earlier we used to study for marks, now we are studying for knowledge, just to gain different perspectives of life. In MBBS, anatomy, different subjects, we don't do the ratification only, we are studying for knowledge. So there's a difference which lies. So अनुष्का, क्या ऐसा होना चाहिए था कि ये मार्क्स की रेस शुरू में ही ठीक की जाती ताकि लोग लर्न करके अडॉप्ट ज्यादा करते, रादर की ये रैट रेस होता? Of course, ma'am. ये कुछ education system, whether it's in India, whether it's in Russia, where I am, it's everywhere. We should not run behind the marks, and it should be taught to our younger ones, the little ones who are in primary stage, who are entering first or second class. Don't ask them you have to get these. Like parents used to say, अगर आपकी first rank आई, second rank आई, then we'll get you chocolates, we'll get you a cycle, what you want. Don't like. It's like you are just giving Bribing. them some, yeah, it's Bribe. just like Bribe. bribe. Yeah, it's Yeah. just like bribe.
instead of that, if you'll say, okay, gain some knowledge better, it will help you out in future. So it will naturally help us out. And this is the thing that we actually have experienced ourselves. Instead of just studying for the marks, when you study for yourselves, even after 3 years, if you will ask me that, I'll be able to answer that question to you. But if I have just studied it for marks, like, okay, like I have to just remember that 2 plus 2 is 4, 2 plus 2 is 4. But if I'll just have the concept clear that why 2 plus 2 is 4, because in that number we add the 2, that's why it's 4, then it's a different thing. So yeah, I particularly think that it should be, inherited in the children. We should teach them, and we should also taught ourselves this thing that we have to gain knowledge. We should not run behind the marks or the academic grades only. थैंक यू सो मच अनुष्का. तो एज पर यू, हर एक बच्चे को एग्जाम से पहले एग्जाम फियर होता है? Yes, ma'am. Everyone has. गारंटीड? Everyone. गारंटीड? Yeah. डिस्पाइट वो कितनी भी Yes, अच्छी ma'am. प्रिपरेशन कर ले, उसको एग्जाम फियर होता है. Ma'am, it's like, I'll tell you, like one student who doesn't studies much, or जो मतलब, not so good in studying. So what happened, उसको डर रहेगा कि मैं फेल ना हो जाऊं. एक बच्चा होगा, उसको जो डर होगा कि हाँ मेरी इतनी प्रिपरेशन है, मेरे कितने मार्क्स आएंगे. एक टॉपर बच्चा होगा, वो सोचेगा मेरे 100% क्यों नहीं आएंगे, मेरे 90% आए तो दिक्कत होगी, मेरे 98% आए तो दिक्कत होगी, मेरे 99% आने चाहिए, मेरे 100% आने चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ग्रुप्स देयर इज ऑलवेज सम टेंशन व्हिच लैग्स बिहाइंड. ऑलराइट, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको एक बटन देती, क्योंकि आपने कंप्यूटर्स पढ़ा था 12th में, और मैं आपको बोलती रीस्टार्ट करिए एजुकेशन को, तो आप कैसे स्टार्ट करती? कम से कम शब्दों में आप कैसे स्टार्ट करती, स्पेशली अपने इंडिया के लिए? मैम बेसिकली जो मैं स्टार्ट करती, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट प्रेशराइजिंग. एकेडमिक्स के साथ साथ आप थोड़े लाइफ लेसन्स भी दें जो नहीं होते. तो वन, yes ma'am, 1 second ma'am, Avinash, sorry. It happens, ma'am, just like if I will be able to restart the education system, apart from the academics, the life lessons should be also included for the children. Which is not कि आप there. कैसे, I guess ma'am it's not there. In our school I was blessed to have it. Like I also feel like you should also be connected with your culture, with the cultural heritage. So it should also be taught somehow, and also teach the children that you have to learn because you want to, and the other thing that not only for the marks, to gain some knowledge, to have the ability. So Okay. I would really restart it, like discipline, cultural values, and academic is that, of course, the most important thing we have. And apart from all this mixture, love, honesty, everything, the basic values will make it the best thing. So just two things more. So Anushka, you mean to say कि cultural enrichment के साथ जो life की practical values हैं, अगर उसको ज़्यादा जोड़ दिया जाए और एग्जाम का रेस, रैट रेस खत्म कर दिया जाए, तो बच्चों का academic success distribution ज़्यादा better होगा as per you, is it? Not particularly in cultural will affect more of the academic, but some life values, if added, will definitely add up to the more better results for the academics. Okay, एक क्वेश्चन मुझे और प्लीज आंसर कीजिए. डू यू थिंक, क्योंकि आप उस स्टेज से आई हैं और आप बहुत पॉपुलर रही थी अपने स्कूल में, एंड इवन यू वर द प्रीफेक्ट ऑफ द स्कूल, तो आप मुझे बताइए क्या आज की डेट में आप 120 स्टूडेंट्स के क्लासरूम्स को देखकर आई हैं, मिड नॉन मिड सभी फ्यूज होकर के, जब एक साथ प्रैक्टिकल भी आप लोग देते रहे थे? तो आप मुझे छोटा सा एक ईमानदार क्वेश्चन का आंसर दीजिए. आपको लगता है आज के जनरेशन में 2020 में बच्चे, चाहे वो 9th-10th के हों, चाहे 11th-12th के हों, चाहे 6th-7th के हों, डू यू थिंक कि बच्चा अपनी एकेडमिक स्टेटस को अपने पेरेंट को ट्रांसपेरेंटली बताता है सब कुछ, हर कोई? मैम हर कोई का तो आई कैन से, बट देयर आर सम स्टूडेंट्स जो कि बताते हैं. अच्छा, लाइक इवन इफ आई एम, तो बुरा भी हो तो भी?
बुरा Yes, भी ma'am. तो भी? Yes, ma'am. The first time I got less marks here in anatomy was I was really sad and I was so shocked, and more appropriately I would say that I was disappointed from myself because I studied for like 3 days and still I didn't got the desired marks. So I just called my dad and I said ki Papa mere marks kam aaye hain, and it's the first time, and I cried a lot, and he was like, beta, you are doing MBBS, and if you are accepting your success, then you should also accept your failures. Good. So I guess I'm blessed with those parents. I can tell them my failures also. So I have told them about my good marks You and are my bad blessed, but marks. if you are representing all those students, do you really feel, क्योंकि आपने हर वैरायटी के बच्चे देखे? Yes, ma'am. It depends upon person to person. There were some of my friends who would particularly fail in an exam and still told their mother and father that, okay, today I failed. And their parents were always supporting, ki, okay, if this time you fail, next time you can pass it in a better way. So it depends upon person to person, family to family, I guess, because some people who are the toppers even can't tell properly their marks. I have one friend of mine here. If she got 80% and one of her friend got 90%, she can tell her father that she got 80% because her friend got 90%. Okay. So there's a difference. It lies everywhere. I can say that everyone tells, and I can say that no one tells. Some students who are honest may tell, or some students or whose parents are okay with their marks, whether it's good or bad, they can tell. So that's particularly my experience from school and college. Thank you so much, Anushka. You always been an outstanding speaker and expression thrower with your words and emotions. You will be pleased to know that I am going to start a platform, and therefore I have invited you, where my mission is exam se pehle, because I Hmm. want to include all sector, even parents, majorly parents, क्योंकि Yes, ma'am. बच्चा is a mold of parent. So everything is together. We can't alone be relying in the school system. तो हम लोग एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे एग्जाम से पहले इज द पर्पस कि बच्चों के दिमाग में क्या आता है, पेरेंट्स का रिएक्शन क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली वो अपना उसको एक ऐसा बैकग्राउंड मिले जहाँ पे वो खुल के अपनी बात करें, अगर उसको कुछ आता है तो ठीक, नहीं आता तो भी बताए. एंड जी. इक्वली हम लोग एक टाइम बाउंड सिस्टम में, जैसा कि अभी आपने बताया कि व्हाट आई हर्ड फ्रॉम यू इन द बिगनिंग की एग्जाम की जब तैयारी होती है तो शुरू में बहुत समय भी लगता है, और जब एकदम एग्जाम होने वाला होता है तो एक दिन में 3-4 चैप्टर्स भी आप आराम से कर लेते हैं, मतलब बहुत जल्दी आप जी. कर लेते हैं. सो वी आर ऑल्सो प्लानिंग कि हम एक शॉर्ट ड्यूरेशंस के वीडियोस बना करके, क्योंकि अभी कलरफुल पिक्चर्स से ज्यादा अच्छा पढ़ा सकते हैं. जी. यू विल बी हैप्पी टू नो कि टीचिंग फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स, प्रॉब्ली मैं इयर्स क्या गिनूं, फिर भी 26 साल से बीडी चौरसिया की सारी बुक्स जो आप लोग भी पढ़ते हैं, वहां पे एक स्लोगन है कि डॉक्टर्स जी. डेड बॉडी से बनाए जाते हैं. तो आपको वहां कलरफुल चीजें दिखा करके पढ़ाई जाती हैं, तो आप डेड बॉडीज को अच्छे से पढ़ के लिविंग को करेक्ट करने का सिस्टम करती हैं. तो हमारी भी छोटी सी कोशिश है कि हम कलरफुल पिक्चर्स के साथ, क्योंकि आपके ब्रेन के रिसेप्टर्स, आपने शायद सेकेंड ईयर में फिजियोलॉजी में पढ़ा हो और एनाटॉमी में भी पढ़ा होगा, ह्यूमन न्यूरो एनाटॉमी में खास तौर पे, जी. कि आप कलरफुल पिक्चर्स को ज्यादा रजिस्टर करते हैं और वो लिखे बजाय कि ब्लैक एंड व्हाइट आपको दिखा दिया जी. जाए. सो हम भी अपनी तरफ से काफी इम्प्रोवाइज तरीके से कोशिश कर रहे हैं, और आपको एक मेंबर की तरह जब कभी आप फ्री हो, आई वुड रियली बी लविंग टू हेयर फ्रॉम यू, बिकॉज आप जी. स्टूडेंट फ्रेटर्निटी ग्रुप में से हैं, और आपसे बहुत कुछ मैं सीख पाऊंगी, क्योंकि आपने वो स्टेज पार किया है और आप उस मिडिल स्टेज में हैं जो आपसे नीचे 12th क्लास के बच्चे हैं, आप ग्रेजुएशन में हैं, और आपके बाद आपको प्रोफेशनल वर्ल्ड भी देखना है और एक्सपर्टीज भी देखना है और अपना प्रेजेंटेशन भी देखना है. तो आप वो जी. बहुत इंपॉर्टेंट एज ग्रुप को, ब्रिज को एड्रेस कर रही हैं. थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपना बहुत ही स्पेशल टाइम दिया. It आपको was my पूरे pleasure, देश ma'am. में, आपको पूरे देश में अगर ये बात कहनी हो, जो एक चैनल के थ्रू जाती हो, जिस चैनल में हमने कहा परीक्षा से पहले, तो आप जी. पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी टू ईच एंड एवरीबॉडी? प्लीज इमेजिन कीजिएगा, आप जिस कंट्री की हैं, आपको पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली मालूम है, हम 7 बिलियन में से 1.4 के आसपास हैं, पढ़ने वाले बच्चों का सबसे बड़ा एज ग्रुप है. तो आप क्या कहना चाहेंगी उन पेरेंट्स और बच्चों को
जो स्टूडेंट हैं, जो फर्दर आगे अपने करियर तक आगे बढ़ रहे हैं, स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ तक, प्लीज? First thing, as I said in the starting of the video, is कि do whatever you love. आप जो भी करें आप अपने दिल से करें, डोंट फोर्स इट. और स्पेशली जब स्कूल से आप आगे जंप करते हैं कॉलेज में, उसके पास कॉलेज के बाद जब आप जंप करते हैं प्रोफेशनल्स में, अगर आप स्कूल में कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे कि ठीक है मेरे को कॉमर्स नहीं पढ़नी, मेरे को साइंस पढ़नी है, जबकि आपका साइंस में उतना रुझान नहीं है, बट यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग विद योर लाइफ की ओके साइंस ले लेंगे, तो वो 11th-12th आपके 2 साल नहीं देखेगा, वो आपका डिसीजन आपकी लाइफ लॉन्ग जो आपकी आगे जिंदगी पड़ी है वो देखेगा. So basic thing, the first thing first is that love whatever you are doing. अगर आप कोई चीज जबरदस्ती करेंगे तो नहीं होती है. अगर आप जो कर रहे हैं अपने मन लगा के करेंगे या फिर आप अपनी पूरी शिद्दत से करेंगे, तो आप कुछ भी करिए आप पक्का सक्सेसफुल हो जाएंगे. And the thing for parents is don't force things on your children also. आप उनको समझा सकते हैं, आप उनका मार्गदर्शन करिए, like not properly brainwash, but you can always guide them, क्योंकि मम्मी पापा माता पिता ही होते हैं our first teachers, और पहला मार्गदर्शन उन्हीं से होगा. हमें सही राह पे लेके जाने के लिए they are the first mentors and always like best decisions जो आपकी लाइफ के लिए लेंगे. लेकिन पेरेंट्स को भी हमेशा अपने डिसीजंस को इम्प्रोवाइज नहीं करना चाहिए अपने बच्चों के ऊपर. जस्ट लाइक I have seen some parents ki idhar bhi, even in Russia, I have seen 2-3 students who didn't wanted to do MBBS but are doing just because their parents wanted to. So parents आप guide करें, आप मार्गदर्शन करें, but always support your child, and children should also take their parents' advice in a good way, not of thinking that उनका नहीं हो पाया शायद पास में कुछ तो हम पे वो करें. It's never like that. So the thing is it goes hand in hand. जब एक पहिया चलता है तो काम नहीं चलता, जब गाड़ी के दोनों पहिए साथ में चलते हैं तभी गाड़ी स्मूथली चल पाती है. थैंक यू अनुष्का. That's my point of view. मैं आपको याद दिला रही हूँ और आपको प्रॉमिस कर रही हूँ, बीइंग वन ऑफ योर टीचर, कि हम इस प्लेटफॉर्म पे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों का एक बहुत हेल्दी टॉक करना चाहेंगे, ताकि उनके बीच में ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट ज्यादा हो, जैसा आप जैसे ब्लेस्ड बच्चों के बीच में हो. तो मेरे जी ख्याल से हमारी सोसाइटी ये मिस कर रही है. थैंक यू सो जी मच फॉर द प्रेशियस टाइम. और जैसे ही स्टूडेंट्स की और डिमांड आती है कि वो दीदी से, आपसे या अनुष्का से कुछ सीखना पढ़ना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो मैं जरूर आपको दोबारा से इनवाइट बिल्कुल मैम. करूंगी. राइट? It was my pleasure मैम. Yes. आई विश यू अ ग्रेट सक्सेस. पूरी टर्निंग पॉइंट की टीम से बहुत प्राइड फील होता है, और आपके सभी Thank you, दोस्तों को जो आपके साथ हैं, आप एक मिसाल हैं हम सबके लिए, और बहुत अच्छा करें लाइफ में. एंड व्हेनेवर यू फील लाइक समथिंग, अगेन इंडिया इज विद यू. हम सब आपके हैं. गॉड ब्लेस यू. बेस्ट विशेस. बाय बाय. Thank you so much ma'am. Have a good day. Thank you so much ma'am. Good.